ऐसे कुछ लोग भी होंगे जिनको आपने परमानेंटली म्यूट पे डाल रखा होगा, जिनसे आप बात करना ही पसंद नहीं करते, तो वो कौन लोग हैं? क्योंकि आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पर हर रोज आपको पिंग्स आते हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आपको परमानेंटली म्यूट पे डाल रखा है, बात करना ही नहीं है इनसे? यार आप मरवाओगे यार मुझे, ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगा इस चैनल पे। मुझे भी रहना है यार। एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूं प्रभात आपके साथ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रांड न्यू एपिसोड है बी बोल्ड विद प्रभात का, और आज हमारे साथ हैं ध्रुव जी। मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा सर एक बेसिक इंट्रो अपने बारे में दे दें सर, कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए हैं, कैसे आना हुआ, इनिशियल डेज क्या थे, थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके बारे में। श्योर। तो पहले तो सबको मेरा नमस्कार। Thank you for tuning in. My name is Dhruv Ghanekar. I'm a music composer, producer, songwriter. I've been in the music business and the music world since the last 24 years, maybe around. And I primarily compose and produce music for movies, for advertising. इनिशियल डेज मतलब जब आप कॉलेज कर रहे थे या स्कूल कर रहे थे, तब क्या ये म्यूजिक था? तब क्या ये म्यूजिक साथ में चलता था? हाँ और ये बिल्कुल। कैसे फुल टाइम हो गया, मतलब ये? I mean, जब से मुझे एक्चुअली याद है, मैं म्यूजिक में ही मतलब I've been involved in music in some way or the other since a kid. तो मेरे बचपन में भी मैं एक्चुअली मेरी शुरुआत म्यूजिक में गाने से हुई। तो जब मैं छोटा था तब मैंने गाना पहले सीखा, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं सीखते हैं, और फिर वहां से I started doing recording for films and for advertising and all kinds of things, and I used to also act when I was a kid, but ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक में मेरा शौक रहा है बचपन से ही। और when I went to college, I kind of started dabbling in guitar, and that became an obsession in college. Alright. So मैं यहाँ शुरू करना चाहूंगा। धाकड़ मूवी का भी आपने म्यूजिक दिया है, म्यूजिक तो बहुत ही धाकड़ है। मतलब मैं शायद परसों इसकी बात कर रहा था ऑफिस में, तो मुझे किसी ने बोला कि ट्रेलर में एक पार्ट आता है जहाँ पर एक म्यूजिक पीस है बहुत छोटा, जहाँ पर कंगना रनौत की पीछे से साउंड आता है एक चिल्लाने का। वो जो गूज़बम्प्स, मैं परसों एक बात करता हूँ, मैंने कहा वो म्यूजिक पार्ट बहुत अच्छा है। मैंने अपने शो में एक्चुअली यूज किया था उस पार्ट को थोड़ा सा। तो मैं जानना चाहूंगा कि मूवी के जो म्यूजिक बैकग्राउंड था, जो स्कोर आपने दिया, या जो गाने, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा और क्या डिफरेंट था? क्योंकि बहुत बड़ी मूवी थी, बहुत ज्यादा Yes. प्यार भी मिला लोगों म्यूजिक के उस पे। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस धाकड़ के लिए? Dhakat is a project that came to me because of my friend Rezi guy. Rezi had a vision too for this film, and he wanted a very international sound for it. और मेरे म्यूजिक टेस्ट और उसके म्यूजिक टेस्ट काफी मतलब सिमिलर है वैसे। एंड ही तो जैसे होता है फिल्मों में एक रेफरेंस दिया जाता है म्यूजिक डायरेक्टर को। तो माय जॉब एज अ म्यूजिक कंपोजर इज टू लिसन टू दैट रेफरेंस एंड देन forget about it, उसको discard करके अपने खुद के जो whatever your own sort of influences are there and inspirations, you have to bring that to the table. So what started off as being a very international and very broad sounding sound, I was kind of called in to create something which was a very collaborative sort of an effort. तो ये फिल्म में हम लोग ने काफी आर्टिस्ट के साथ काम किया है, lot of great musicians. तो the singer जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, she is from Russia actually, she's a Russian singer. तो उसके साथ मैंने 2 साल पहले एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया था, और उसकी आवाज बहुत ही मतलब कमाल की आवाज है, she's an incredible artist. तो उसने I wanted to cast her in this film or create a sort of a sound for Kangana's character. तो that what you're probably talking about is Olina's voice. So, अब हम बात करते हैं इस मूवी के टाइटल ट्रैक की, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा। मतलब लोगों ने काफी रील बनाई इस गाने पर, काफी लोगों ने पसंद किया इस म्यूजिक को। तो उसकी स्टोरी क्या थी? तो पहली बात तो ये गाना नॉर्मली हम लोग फिल्म्स में जब गाने की बात करते हैं तो गाना रिकॉर्ड फिल्म होने के पहले होता है। मोस्टली गाना हम लोग पहले तैयार करते हैं और फिर फिल्म मेकर्स जाके उसको शूट करते हैं या एडिट करते हैं उसके ऊपर। बात रही इस गाने को लेके, तो ये गाना हम लोग ने फिल्म
एडिट करने के बाद बनाया एक्चुअली। तो जब मैं फिल्म को स्कोर कर रहा था तो एक फिल्म में एक सीन है, एक मोन्टाज सीक्वेंस है जहाँ कंगना's character is down and out, and then she rises from her situation and she fights back and comes back to life. So the montage sequence which is there, it kind of is an encapsulation of the entire film in that sense, because it is about being down and out, and it is how you rise from the ashes and you find your inner voice, and you know how you become the how कैसे कहते हैं कि वो धाकड़ ऐसे बनती है, वो गाने के थ्रू बनती है. So the song for me in my mind was a sort of you know, it has to be an inspirational song. It had to be a powerful song, and it had to support the film, and at the same time it needed to create that energy which is there in the scene. So there were lots of things in place, and on top of that I knew that I needed a very powerful voice to sing the song, because without that powerful voice you can write an amazing song, लेकिन अगर गाने की सिंगर की कास्टिंग अगर गलत हो कभी तो फिर गाना फिर वहीं पे रुक जाता है. When the song started finally taking shape, you know, क्योंकि this kind of a song generally वो एक सिटिंग में नहीं होता है, वो काफी दिन हम लोग ने उस गाने पे मेहनत की. फिर मैंने ऑर्केस्ट्रेशन प्राग में रिकॉर्ड किया, और जैसे ऑर्केस्ट्रेशन आ जाता है गाने में, you know, it takes on its own life of its own. So it was a lot of sort of back and forth, going back, and you're having lots of people coming in, collaborating on it, adding their own magic to it. And then once we did that, you know, we knew that we had a theme for the film also, and the theme for the film was born also out of that. एग्जैक्टली. सो यहाँ से मैं थोड़ा सा कुछ मेरे बोल्ड सवाल, क्योंकि इस इंटरव्यू का नाम है बी बोल्ड विद प्रभात, तो कुछ बोल्ड सवाल, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, होगा नहीं वैसे पर हो भी सकता है. तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपके व्हाट्सएप पर ऐसे कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको डेली मैसेज करते ही करते हैं, मतलब उनको करना ही है? Well, the first person has to be my wife, of course. All right. Because she's the one that I speak to the most in the day, for various reasons. And then there are, you know, we have multiple family groups. So there is one which is, it's active the whole day. पूरा दिन कुछ ना कुछ उस पे रहता है, चलता रहता है. But so every few hours I go there and I peep and I see क्या हो रहा है. And because but I can't spend more than 5 minutes on that, you know, otherwise I'll go mad. ओके. सो ऐसे कुछ लोग भी होंगे जिनको आपने परमानेंटली म्यूट पे डाल रखा होगा, जिनसे आप बात करना ही पसंद नहीं करते, तो वो कौन लोग हैं? क्योंकि आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पर हर रोज आपको पिंग्स आते हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आपको परमानेंटली म्यूट पे डाल रखा है, बात करना ही नहीं है इनसे? यार आप मरवाओगे या मुझे, ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगा इस चैनल पे. मुझे भी रहना है यार. So, क्या होता है कि जैसे मेरे पापा हैं, सबके पापा होते हैं, तो वो एक ताना मारते थे हमेशा बचपन में, जब भी उनको एक फिक्स होता था उनका, ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, व्हाटएवर. तो आपके जो पापा थे वो क्या आपसे एक बात कहते थे और आपको पता है कि अगली लाइन यही होने वाली है, ये तय है, तो वो क्या लाइन होती थी? So my dad used to always tell me, यार इस बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है, he is going to be on the street one day. So that's what he would say. And somewhere that, you know, that pressure was, I don't know whether it got into me or what, but generally I would always look at him and I would always smile when he would say that. I don't know why. Maybe I was battamiz or I don't know what, but I would always smile, and that would make him more angry. सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फैमिली में किसी की शादी हो और किसी ने कहा हो कि भैया प्लीज मेरी मेहंदी के लिए म्यूजिक बना दीजिए, मेरी उसके लिए हल्दी के लिए म्यूजिक बना दीजिए? Yes, मैंने किया है मेरे दोस्त के लिए. मेरा एक बड़ा ही बड़ा ही बदतमीज दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है, और उसके फैमिली में एक उसके ब्रदर इन लॉ की शादी थी, और उसके ब्रदर इन लॉ के शादी के संगीत के लिए उसने मुझसे एक आइटम गाना बनवाया. अरे वाह. और and he knows me from back in the day, like when we were schoolmates. और उसको कुछ परवाह नहीं है कि I'm a music director, I'm like, you know, doing movies and all that. He still talks to me like, you know, how you talk to your friend. So he said, यार मेरे लिए एक गाना करवाना, I'm coming to your place tomorrow night. And I'm like, and you know, दोस्तों के साथ ऐसे होता है कि मना भी नहीं कर सकते, ना, because अगर मना कर दिया तो, you know, he will think कि साला ये बहुत भाव ले रहा है. So I had to literally
I had to make the time first of all. और उसने मुझे इतना पकाया, 6 घंटे उसने मुझे बैठ के एक आइटम गाना उसने मुझे he made me do it, and by the end of it I was like, please take this and go away and don't ever come back again. कुछ नए लोग जो है म्यूजिक में आना चाहते हैं और उनके पास कुछ नया तरह का म्यूजिक माइंड में होता है, पर वो उतार नहीं पाते हैं कई बार ट्रैक्स में, या मैं कहूँ सिस्टम पे नहीं आ पाता उनके पास। तो क्या आप कुछ ऐसे टिक्स उनको ट्रिक्स देना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहेंगे जिससे वो अपना करियर ज्यादा अच्छे से बना पाए म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर बात करूँ? I think what we don't pay attention to nowadays is something I always tell, at least musicians who want to be producers or composers, is learn to play an instrument at a very high level. Like try and be a virtuoso, at least. If not a virtuoso, at least get proficient with it. Because what happens is when you become an instrumentalist, your entire way you will think about music is quite different. Now the thing is that most of the time today, most of the kids are coming in from and doing music on the computer, so they have no real understanding of how certain instruments are played. So when you're usually writing, when you listen to music, when you listen to certain kind of music, it has a certain richness to it. Chances are that composer has spent a lot of time either studying their instrument or studying the vocabulary. तो ये चीज काफी जरूरी है कि एक इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो गिटार हो या पियानो हो या ड्रम्स हो, लेकिन उसमें आप you should be like fantastic at it. You're really good at it. Then from there you can learn other things. You can learn arranging and you can learn production and you can learn other instruments as well. लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत जरूरी है. I feel that any composer, anybody wanting to be a composer, I would say start with becoming really, 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 really good and aspire to be very good at one instrument. Thank you so very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks, Prabhat. Take care, man. Take care, sir. Take care. Take care, sir. Yeah. Bye. Bye. Radio City.